So यहाँ पे और एक बार देख लीजिए. We had this solver to solve. So like what is happening with Bhumika's machine is that it is showing an error, and it is showing a coding error actually. So we have to reinstall MS Excel. All right. Now, when we have, and she has one more query, that suppose we had set this target. So I am setting this Anjali's target to say 75. I go ahead with what if analysis. No, sorry, this solver. I'm setting the cell and to the value of, I'm setting it to say 75. And by changing cells, these ones, okay. This condition we have already added that C3 till this E3, it should be less than 100. But as Ritika is asking that whatever answer she's getting it in points. So 55.1 cannot be a marks, right? It can be percentages, but not marks. Then in that situation, you can add one more constraint saying that whatever answer we get into this should be integers. So यहाँ पे एक integer option है, and we can add that as well, right? So now we have two conditions: one, all less than 100, and then all should be integers also, right? And so when you add and just tell it to solve, तो यहाँ पे जब ये solve होता है, please take this aside and see whether there is a result. Now in Bhumika's machine, what is happening is that at the background there is no calculation happening. So there is some kind of a programming error over it. Okay. And here, keep the solver solution or restore original values, your choice. If you wanted to keep the solver solution as a scenario, just save it. Save it by the name and mark it as a solver solution. Okay. There it is. So whatever 75, now when I shift to the original values, I can just get the previous values. And with this, we have the answer report. There is some sensitivity and limits report also. If you want to see those also, just put on those and see what it shows. Okay, so here currently is not showing, but there are two more reports, sensitivity and limits. So you can open those and see how it works. I'm restoring original values. So I get the values back 68 here. And at the same time, there is a arrangement over here. The answer report, it's telling you what has been changed to what value, and these are all integers. Okay. So solver is giving you the optimum solution. That's the optimum solution. That's what we saw yesterday, last lecture. Okay. So today what we are going to see is the review and the view tabs. Okay. Before that, I'm just reminding you that under formula, you have the formula auditing, which we have seen. We have traced its dependence and precedence. Remember? Yes. If you had a precedent, you are tracing its. Sorry, if you have a dependent, you are tracing its precedence this way. Now, there are other features also over here, which you can see. If you say show formula, in your sheet, wherever there are formulae, all the formulae will get opened directly. So sometimes when you have an unknown data, you wanted to study this formulae, you can just put on the formula view and so you can see all the formula. All right, put out the formula. Suppose I had an error. Let me show an error also. So when there is a formula, normally you will not get errors because it adjusts itself. But यहाँ पे देखो C6, D6, E6, the formula is the same, but then here this person was absent and she has been marked as absent over here. So there is an error. Now, most of the files, if at all you have any errors and you don't know what that error is all about, you can also check out the error checking formula, right? And you can get the help on this error. If you are connected to the internet, it will tell you specifically that value error is for some specific data which is not available or may be wrong. All right, so you get proper help when you have this help on this error. You can also show calculation steps
and it will show you evaluation. It's showing you right from the beginning value plus E6 is going to give you a value error, and then finally you're getting the value error. So now here again, evaluate C6 is A absent, D6 is 76. Here itself there is an error which is getting found. A plus 76 has no meaning, and so it is given you a value error. So by evaluating that particular expression, you will come to know what exactly this particular error is all about, right? You can ignore the error or you can make the changes in this particular data. So you know that if you put a sum function, it will not give you an error, but it will just calculate these two, right? The same thing you can get through the evaluate formula also. So when you click on evaluate formula, again, the same thing has opened up. It's showing you calculation steps. You can evaluate, and see where the error is getting formed. Evaluation is also helpful when you are trying to understand the formula. तो क्या पहले calculate हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, फिर क्या हुआ? Is there any error which is getting created at what particular step? And then it is helping you out understand the formula. All right, fine. So that is one more part in this formula editing which you should be knowing. All right. हमने name manager किया है क्या? आपके लिए शायद okay, that's very good. Okay, I'm just so लगे हाथ फॉर्मूला के ही सेक्शन में यहाँ पे डिफाइंड नेम्स नाम का भी एक सेक्शन है. नाउ नेम्स मींस प्रॉपर नेम्स गिवन टू एनी रेंज ऑफ सेल्स. कि जैसे आपने अभी तक पाइवेट टेबल बना दिया तो पाइवेट टेबल को एक नाम दे दिया. अगर फॉर्मेट टेबल है, जैसे अगर आपने यहाँ पे होम में जाके इसको फॉर्मेट टेबल कर दिया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ नेम्ड रेंज. रिमेंबर, ये कलर से तो हो ही रहा है, बट देन यू गेट एन आइडेंटिटी टू दैट पर्टिकुलर टेबल, राइट? ये वाला. एंड इसका नाम अगर आपको देखना है तो यू कैन सी इट इन द टेबल नेम ऑप्शन. सो हर एक टेबल को आप आइडेंटिटी एक्सेल दे देता, इफ इट ऑल इट्स अ स्पेशल फीचर. लेकिन अगर आपको नाम देने हैं स्पेसिफिकली टू सम रिकॉर्ड्स, यू कैन डू इट इंडिविजुअली ऑल्सो. सो हाउ टू डू दैट? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये मार्क करना है कि ये पूरा जो भी रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड, ये अनाया का रिकॉर्ड. तो आप है ना ये पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके यू कैन गो इनटू दिस फॉर्मूला सेइंग दैट आई वांट टू डिफाइन अ नेम फर्स्ट फॉर द रिकॉर्ड. सो व्हेन आई क्लिक ऑन डिफाइन नेम, सो इट्स आस्किंग मी डू यू वांट टू पुट द नेम एज फीमेल. अगर वो नहीं चाहिए आपको, अगर ऑटोमेटिकली चाहिए तो पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता है जब आप डिफाइन करोगे तो ये नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. But then I'm selecting the name and I click on OK. This record, जैसे individually in cells का नाम C2, D2 ऐसा है, लेकिन अगर आपने ये रिकॉर्ड सिलेक्ट कर दिया तो ये रिकॉर्ड का नाम अनया हो. Okay? So similarly you select and you apply define name. अनुजा से मार्क करना है, हाँ कर दे. Now there is a problem. अगर 10,000 रिकॉर्ड है तो क्या आप एक एक करके लगाओगे? तो that's not possible, right? ऐसे सिचुएशन में यू कैन ऑल्सो क्रिएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिलेक्शन. तो आप है ना पूरा टेबल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन यू क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्शन, राइट? नाउ आई वांट टू क्रिएट नेम्स, लेकिन ये टाइटल्स के नेम्स बनाने हैं या लेफ्ट कॉलम के नेम्स बनाने हैं, दैट्स योर चॉइस. मुझे टॉप रो का नहीं चाहिए, लेफ्ट कॉलम के नाम के तौर पे चाहिए, राइट? एंड देन आई क्लिक ऑन ओके. रिप्लेस एग्जिस्टिंग, क्योंकि हमने अनया को मार्क किया था पहले. आई वांट टू रिप्लेस दिस, आई वांट टू आल्सो रिप्लेस अनुजा's रिकॉर्ड, एंड देयर इट इज. इतना ही करके आपके पूरे नाम तैयार हो गए. हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? कि अगर आपने कोई इसको सिलेक्ट कर दिया, so you'll see Kirti's record has been selected. Okay, it has gone marked, it has got named. Got it? Now what is this use? नाम तो दे दिया, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर, राइट? तो जब आप किसी और शीट में काम कर रहे हो एंड देन यू सडनली वांटेड टू गो टू दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, जैसे कीर्ति का रिकॉर्ड आपको चाहिए, देखना है, फॉर सम रीजन रेफर करना है, तो यू नीड नॉट सर्च एंड हंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड. यू हैव कंट्रोल जी, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म टू गो टू, राइट? आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं एंड यू गो टू के,
लिस्ट कीर्ति, ओके कर दिया तो इट जहां पर भी आप हो वहां से वो आपको जंप करके get it will get you to that particular record. Alright. So to find a particular record, you can name the records, name the cells, right? Okay. Now another way to use it is something like this. कि जैसे quantities भी है ना, तो column को भी आप नाम दे सकते हो. Can you see? So not necessarily record को ही नाम देना है. ये quantity का column है, आपको इसको नाम देना है. So you can simply go ahead with defining the name. Do you want to define it as quantity? Okay कर दिया. That's it. Now another use of this quantity, ये तो है ही कि अगर आप किसी और शीट के ऊपर काम कर रहे हो and you wanted to go to that particular record, you can just go to that specific record. It will take you to that record. That's there. इसके अलावा ना आप नामों को फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो इज इक्वल टू सम ऑफ, अब मुझे अगर मैं क्यू डाल देती हूँ तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी नाम का एक स्पेसिफिक नाम आ गया, राइट? आई सिलेक्ट क्वांटिटी एंड एंटर, तो ये पूरे क्वांटिटीज का सम इसने निकाल दिया, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट नॉर्मली अगर हम सम निकालते हैं तो इट फील्स लाइक यू वोंट अंडरस्टैंड, इजंट इट? तो अभी मैंने ये रेवेन्यू का सम दे दिया है एंड if I look at this I2 to I247, ये समझ में नहीं आता है exactly क्या है unless until you don't trace it. ट्रेस करने के लिए आप एक्चुअली डबल क्लिक करके देख सकते हो या फिर आप इसको ट्रेस प्रेसिडेंस कर सकते हो, you get that particular data, right? But then this formula is much more easy to understand. This is the sum of quantities, so you can go ahead with that. All right, okay. नाउ यूज इन फॉर्मूला नाम का एक ऑप्शन है यहाँ पे कि जैसे अभी हमने करके देखा सम ऑफ, एंड ये तो आसान है, क्यू है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, उसका स्पेलिंग भी याद नहीं है, तो यू कैन सिंपली ओपन यूज इन फॉर्मूला एंड पिक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम एंड यू गेट दैट calculation. So use in formula is something that you can use this in formula, the names of the one, right? So इसके दो तीन और uses है, एक to search that particular record, another is to use it in some formula, right? And to make the formula more easy to understand, right? Okay. अभी इतने सारे आपने नाम तो बना दिए and there is a time where you don't want those names. आपको वो वाले names नहीं चाहिए, no longer relevant, तो आपको इसको निकालने भी है, isn't it? तो एक एक करके तो निकाल नहीं पाओगे, isn't it? So then you can go ahead with the name manager. So when you click on name manager, you get all those names which have been created, right? इसमें you will also see some timeline, can you see? जो automatically arrange हो चुका था, हमने जो timeline and slicer डाला था वो भी आ गया है, वो निकालना ही नहीं निकालना, it's your choice. You can directly select and shift दबाओगे तो आप consecutive select कर सकते हो, and if you are selecting some specific तो control दबा दीजिए and then specific select कर दीजिए. This control and shift is used everywhere, ऐसा it's a universal thing actually. तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो I just select all of them till Wasim and then I can simply say, since I cannot delete the slicer over here, I'm just going to select till Suhani and I'm going to delete it. Okay, like this. Are you sure you want to delete it? वो निकल गया, right? These are system created, so you are not able to delete them directly because it is connected to a pivot table, right? But बाकी के आप यहाँ से निकाल सकते हो. You can also edit. Okay, तो आपके पास शकील का रिकॉर्ड है, इसको आपको एडिट करना है. शकील रिकॉर्ड ये कहाँ है? ये वाला रिकॉर्ड है, आप सिर्फ इतना भी ले सकते. So you are editing that particular name record. Open it up and okay कर दिया. That's it. You can edit it, right? अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो what I'm going to do is I'm going to select all of them
एंड सिर्फ टाइमलाइन जो है वो मैं ऑफ कर देती हूँ, मैंने ये दो ऑफ कर देते हैं, देन आई डिलीट ऑल ऑफ देम, दैट्स इट. Got it? So then this names come in very handy for searching a record or using it in the particular. Okay with this? Okay. Now let's turn towards the review and the view. So these are the two last parts of your data. Okay. Yeah. Help me with this also. ये किया आपके बैच को किया था मैंने. Get data data part. नीचे बैच में दे. नीचे बैच में. Okay, fine. Okay, now there is another small part called as get data. It's not small actually. This section is the beginning of Power BI. Okay, this section is the beginning of Power BI. Power BI is a higher software than Excel, right? Excel is unable to handle huge data. So when I say huge means, अभी तक जैसे हमने 10,000, 15,000, 1 lakh records वो handle करता है, but beyond a particular level, it does not handle it. It does not have the capacity to process the work. तो एक्सेल में अगर आपने काम भी शुरू कर दिया तो वो है ना, जैसे हम कहते हैं लोडिंग का कभी ये आता है ना, तो दैट वे इट कीप्स ऑन लोडिंग एंड कीप्स ऑन प्रोसेसिंग, तो आपका काम स्लो हो जाता है. So whatever you wanted to do visualizations, and if you wanted fast calculations and visualizations, then you should go ahead with Power BI. Power BI is a specific software जो Microsoft it's free to use actually. Power BI desktop is free to use. Power BI Enterprise नाम का एक सॉफ्टवेयर वर्जन है उनका, जो पेड वर्जन है, जो सिर्फ कंपनीज यूज करते हैं ज्यादातर, बिकॉज कंपनीज को डेटा इज क्रूशियल, कॉन्फिडेंशियल, तो वो ज्यादा इसको दे डोंट वांट पीपल एवरीवन टू सी द सेम डेटा. राइट, तो यहाँ पर दिस सेक्शन गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा is for various kinds of databases. Can you see all the names of the databases? Databases, SQL का server database है, Access का database है, right? If you knew how to use SQL server, you can use this. ठीक है? Similarly, Azure, अगर आपको Azure आता है तो आप इसको use कर सकते. Okay? And these databases are very huge, very huge. No, you cannot just compare that hugeness of that particular data, right? Huge. बहुत बड़े बड़े सोर्सेज आप यहाँ से यूज कर सकते हो. अगेन हियर फ्रॉम वेब, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा भी अगर आप पुल करना चाहते हो तो यू कैन पुल इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेब ऑप्शन, राइट? So there are many options over here. What is really interesting for you people is that you should know that we can get data into Excel from various sources. So you can just write it down. Get data is used to pull data from different sources. Get data is used to pull data or to import data from various sources into Excel. And then analyze the data in Excel. Okay, just to make our work easy, I have already created some files in this. तो जैसे यहाँ पे मैंने एक names वाला फाइल निकाला है, तो let me see. Okay, we have these names. Okay, this is a text file. This is a simple text file, right? Now text file भी आप copy paste, बहुत से लोग है ना copy करते हैं and paste कर देते हैं, but then it does not get pasted in the form of a column. It gets pasted inside one cell only. तो आपको है ना Excel format में तो मिलता नहीं है. This will not happen if you are doing it from get data. See, साधा आपने simple copy paste कर दिया तो वो table format में नहीं आएगा. Okay, Excel के अंदर वो एक ही सेल के अंदर चला जाए. लेकिन अगर आप गेट डेटा में से उसको लेते हो तो फिर इट कन्वर्ट्स इट itself in the form of a table, right?
सो वो देखेंगे हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक सो इन दोनों ने हमें एक एक फाइल दिया था, याद है? कोटेशन, या ये एक्सेल का फाइल है क्या? ये एक्सेल फाइल। आपने मुझे एक ये दिया था ना, इनवॉइस भी दिया था ना आपने कुछ? रोहित आपने दिया था मुझे, पीडीएफ होता ना? So let me just search for that particular PDF file. ये वाला है, देखो, कोटेशन ऑफ हैंडबिल है, डाउनलोड नहीं है, लेट्स सी। अच्छा ठीक है, चलो ये यूज कर देते हैं। Okay, so this is one PDF file, alright? So one text file, one PDF file, one image file भी हम try करेंगे. Let's see whether we have an image file. Create कर देते हैं. Let me just create a small image file. Paint, I'm creating it in Paint. I'm just trying to create different kinds of data and in different formats. I'm saving this under the downloads only. नाम हम दे देते हैं marks, and marks भी अगर है तो वो PNG फॉर्मेट है या फिर JPG फॉर्मेट है, means it's a picture. ये आ गया? Done. Now in Excel there is this new special feature called as get data. You can get the data from different sources. Excel का ये अलग से वर्कबुक में इसे पुल करना तो आसान है क्योंकि Excel का फॉर्मेट एक जैसा है, तो वो तो आसान है. You can pull any one of the Excel sheets. तो जैसे आपके पास कोई, I'm just selecting any random file. I'm picking up this Excel file. I say import, right? So when I'm importing, what happens is this file is trying to get the data from a different file. That's why it is called as get data, right? And now it's tried to open this, and it's showing that there are two particular data. Which one do you want to pull, right? तो मुझे ये वाला डेटा चाहिए. There it is. Yes, sir. And then I want to load it directly. I can load it means I can get into Excel directly. या फिर इसी पार्ट में हमें एक ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन भी दिखाई देता है. So when I click on transform data, it is going to open one window in between called as the Power Query Editor window. Okay, right? What does this do? It is actually showing you the records, and then there are some options that you can work with. Can you see over here? For example, आपको कुछ columns नहीं चाहिए, तो you can just simply edit the columns from here. Can you see multiple grades? ये वाला column आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से remove column कर सकते हैं. Got it? Right? And then these columns are not available. आप इसको भी remove कर सकते हैं. Means you're cleaning all that particular data. Got it? Okay. Then you can actually go ahead making some minor changes in these as well. जब आपका काम खत्म होता है, see when you're doing all this, when you're using all these features, means you are using SQL queries. So SQL is a special language जो डेटा के साथ काम करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं. अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप इंडिविजुअली भी उसके साथ काम कर सकते हैं. देयर आर मेनी क्वेरीज इन दिस. लेकिन इफ यू आर अ लेमैन, यू आर नॉट अ प्रोग्रामिंग पर्सन, तो आप इन्हीं फीचर्स का यूज करके आप बेसिक क्वेरीज को फायर कर सकते हैं. गॉट इट? राइट? And then learning a Power Query editor in details is a part of Power BI. Okay, right? So you can always go ahead learning
for Power BI. Okay. Now when I say close and load, तो यहाँ पे what it does is it opens a new sheet. उस न्यू शीट के ऊपर वो सभी जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया था, 2 टेबल्स से उसमें से एक टेबल हमने सिलेक्ट किया, उसमें से भी कुछ कॉलम्स हमने निकाल दिए एंड जो रेलेवेंट कॉलम्स चाहिए थे हमको, यही वाले यहाँ पे इसने पुल करके आपको दे दी। यानी पास फेल ग्रेड्स निकाल दिए थे मैंने, वो निकल गए, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेटेड टेबल आल्सो, ताकि आप डायरेक्टली इसके ऊपर सॉर्टिंग फिल्टरिंग एनालिसिस रन कर सकते हैं, राइट। What you have to do is you can simply go ahead give it has got a good name also, आप इसको directly use कर सकते हैं. So much of your data has got prepared for analysis in data in Excel. ये हो गया, you are pulling data from Excel file to Excel file. Yes, right? Okay. Now let's do the same thing. Data, get data from a text file. So it's possible for a text file also. Now text file यहाँ पे names का एक text file है, तो हमने select कर दिया, import बोल दिया. Again, it's going to come into that Power Query Editor section. यहाँ पे, right? You had headers, column 1 and column 2. आपको नाम and full name you wanted as the column headers. Then you can transform that data. And when you're transforming the data, you can just convert this. So you wanted यहाँ पे एक option है transform. Use first row as headers. Can you see? यहाँ पे. So this is also a SQL query. लेकिन यहाँ पे जैसे एक बटन है तो मैंने use कर दिया name and full name became the headers. ये transformation ला दिया हमने, and then these are some steps which are getting recorded, right? You don't want them, you can remove them, right? Promoted headers ये नहीं चाहिए, आप निकाल सकते हो, it goes to the original. Yes, right? So these are some stages that it is recording. So that is one more plus point for transforming data. Done. Your work is done. ये आप यहाँ पे close load कर सकते हो. So now there is a new sheet which gets formed, and you will get names and surnames in separate columns. It is no longer a text file. It is also a Excel data now, ready for data analysis. Got it? So this is one more example. Another type of example is you get the data from file from a PDF. Now this was a very classic requirement in the industry. I remember 6-7 years back when we had gone to NTPC, they had this requirement. What Vishal is facing now, they have various vendors. हर एक वेंडर अपना अपना कोटेशन दे देता है. कोटेशन के फॉर्मेट्स पीडीएफ में हो सकते हैं, या फिर एक्सेल में होता है, या फिर वर्ड में होता है, किसी भी फॉर्मेट में होता है. एंड इनको क्या करना होता है, उसका जो भी डेटा है वो एक्सेल में लाना होता है, एंड देन फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है. उनको कंपेयर भी करने हैं, जैसे दो अलग कोटेशन से इनका रेट अलग है, इनका रेट अलग है. तो विशाल हैज टू पुल ऑल दैट पर्टिकुलर डेटा, पुट इट इनटू हिज शीट, फिर कंपेयर करो, फिर उसके साथ कुछ काम करो, फिर नेगोशिएट करो, बहुत वक्त लग जाता है, राइट. Now what they have done is they have converted this, they have made this feature from file from PDF. Alright. लेकिन ये फीचर आपको आपके मशीन पे नहीं दिखेगा, because this is business version. तो सिर्फ कंपनीज जो Office 365 यूज करते हैं उन्हीं के वर्जन में ये फीचर है, क्योंकि ये कंपनीज को जरूरत है. So I click on from PDF. Where is the PDF it is asking? I have put it into this particular folder by the name, I guess quotation है ना. Anyone remembering this name? Just grouping it by type. Okay. क्या था फाइल का नाम क्या था? Anyone remembers? Sure. Quotation वाली. I just want the address actually. Okay. Let me select any one of the data यहाँ पे.
Let me see what is there in this file. Okay, I click on import. Now it is trying to read a PDF file. PDF files cannot be opened. Yes or no? Right? Open हो सकते हैं. You cannot edit the PDF files, right? So यहाँ पे वो है ना, बता रहा है कि आपके इस particular PDF फाइल में ये वाला रिकॉर्ड है. Can you see? So, do you want this table or do you want the entire page? I want table from this page and I transform the data, or then I can just load the data, right? Right. So, इससे क्या होता है? You can again you get a chance to see what you want, what you don't want. That goes into the Power Query editor. यहाँ पे एक बार देख लो अगर आपको ये सभी चाहिए नहीं चाहिए, whatever is the situation. चाहिए, just close and load. Now the new sheet is getting formed and there is this data which is getting pulled into your data. ओरिजिनल फाइल अगर आपको देखनी है तो ये ओरिजिनल फाइल कुछ इस तरीके से है. आई एम जस्ट ग्रुपिंग बाय टाइप एंड लेट्स सी द पीडीएफ फाइल. ये वाला था. अगर आप पीडीएफ फाइल खोल के देखते हो सेपरेटली, ये वाला. कैन यू सी? सो दिस वाज अ पीडीएफ फाइल. इस पीडीएफ फाइल में से उसने रीड करके आपको डेटा दे दिया. सो विशाल, योर वर्क विल बी इजी इफ यू गो अहेड विद समथिंग लाइक दिस. आपके पास ऑफिस है ना, ऑफिस 365 है. ये हैव यू ट्राइड आउट दैट फीचर? अलग अलग कोटेशंस को पुल करके, right? So you can, yes, but then as you said, if the original file itself is very badly made, then boss कोई नहीं help कर सकता है. That again is a trouble. Okay, original source किस तरीके से बनाया गया है उसमें भी बहुत depend करता है. Sometimes too many extra spaces and everything is put inside that particular original file. Then it is unclean data only when it comes to Excel. It tries to get into a clean format, लेकिन then at least data तो आ रहा है आपके पास, right? Okay. Another type of data that you can pull is the picture format. Remember, other sources में और एक है picture. So I'm picking it up from a picture. Picture file हमने store की है downloads के folder में and ये वाला marks. ठीक है? So normally आपको पता है picture file होती है, वो पढ़ी नहीं जा सकती है. It's a picture. तो उसके अंदर से जो भी डेटा है टेबल फॉर्मेट का वो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने पुल कर दिया. डू यू वांट दिस पर्टिकुलर डेटा इज व्हाट इज टेलिंग एंड यस, इंसर्ट द डेटा. ये आ गया डेटा इन द प्रॉपर फॉर्मेट जो चाहिए. ऑब्वियसली यू कैन मेक द चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट. जिसके टाइटल्स नहीं आए हैं तो उसमें एक बार देखना पड़ेगा आपको कि वो रिव्यू का भी ऑप्शन होता है उसके अंदर. डू यू वांट टू रिव्यू बिफोर यू पुटिंग द डेटा इनसाइड एक्सेल, राइट? ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आपके पास ये सब डेटा आ तो गया है. Here, can you see? Mark list names. So let's try out with the names. Now this data is actually connected. Can you see? So जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो you will see some connections which are there. And then in the connection section here, in this section, in the table design section, you have a refresh option also. Can you see? इसका मतलब क्या है कि original data अगर change होता है तो you can refresh it in your particular Excel file. प्रोवाइडेड आप एक ही फाइल में एक ही सिस्टम में काम कर, एक ही मशीन पे काम कर. एक फाइल इस मशीन पे और दूसरी फाइल दूसरे मशीन पे है, दोनों मशीन कनेक्टेड नहीं है तो बहुत को चलने वाला है, राइट? फाइन, इट्स कॉमन सेंस. बट देन जैसे अभी यहाँ पे है ना, आई हैव दिस पर्टिकुलर फाइल. लेट मी मेक चेंजेस इन द नेम्स. लेट्स एड न्यू नेम्स. वी हैव विशाल. विशाल कॉमा रोहित. यस, एंड वी सेव दिस फाइल. ठीक है, ये सेव कर दिए, क्लोज कर दिए, दैट्स इट. लेकिन अब आपको
अपडेट करना है आपकी एक्सेल फाइल को, because it is already connected to that file, you can simply click on refresh and it will see to it that it is refreshed the data. So that is the plus point of having a data pulled from a source. You can import the data rather than just copy pasting the data. Alright. Now इसी का एक extension जो है वो chat GPT and Copilot में है. Alright. So now there are two things. एक तो chat GPT है and Copilot है. Chat GPT is a free version, सबको पता है, right? लेकिन वहां पे fear क्या है, आपका जो डेटा है वो आप chat GPT को दे रहे हैं, इसका मतलब ओपन सोर्स को दे रहे हो, means you are compromising on that particular data security. अगर इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो आप उस चैट जीपीटी में दे सकते हो, बोल सकते हो कि ये फाइल को रीड कर. जैसे अगर आपको कोई पिक्चर फाइल है, उसमें से आपको टेबल को पुल करना है, आपके पास ये फीचर है नहीं in your machine, then you can always ask ChatGPT to open analyze the file and give me the data from that file in the table format. ऐसे डाल दोगे तो फिर वो ChatGPT उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, आपको डेटा दे देता है. Alright, fine. So that is also a new AI version, AI feature which is coming out. Copilot, which is the AI of Microsoft. Okay, तो वो भी kind of again it's a paid version. अभी मेरे पास भी ऐसा है ना, ये paid नहीं है. Means even if this is a business licensed version for MS Office, फिर भी मुझे अलग सा Copilot को परचेज करना पड़ता है अगर मुझे उसके सभी फीचर्स को चाहिए. And then it is a bomb. AI is a bomb in that also. So purchase करने के लिए बहुत ज्यादा ही है. But this is free version of Copilot. I can literally give a file and tell, please. Okay, so for example, extract the data from this file and give in Excel format or table format, जो भी है, ठीक है? And I click on OK. It tries to analyze. So these are some glitches that I am finding. मुझे फाइल बना के नहीं दे रहा है, can you see? जैसे चैट जीपीटी बना के दे देता है आपको फाइल, लेकिन वो फ्री वर्जन है एंड द पेड वर्जन गिव्स यू एवरीथिंग. पेड वर्जन लिटरली गिव्स यू एवरीथिंग 2000 पर मंथ आप पे करो एंड यू गेट ऑल द फीचर्स ऑफ एआई. ओके, बट 2000 पर मंथ का उनको पे करना है. गॉट इट? So then these AI features have been added after this particular thing, but some of these AI features are already there in Excel. Okay, क्योंकि ये need है, ये business के needs है ये सब. Okay, so that is about the data, getting the data from some external sources. Is this clear? Right? Do you want to try it out once with your text file at least? I would suggest एक बार text file से आप try. Okay, now let's see this particular review and view section. All right, this review section is what we will see first. Review, the meaning of review is obviously you have already finished a particular file and you wanted to view it again, right? Now why would you view it again? Either you wanted to check your document, yes or no? Either you wanted to give some messages in that document, ठीक है, या फिर आपने check कर दिया and then you wanted to give some protection to your document, right? So now these type of features you will see under the review section. So the first section comes down for spelling, thesaurus, workbook statistics. So spelling आप इसमें check कर सकते हैं ये. So when you click on spelling, it's trying to find out as per the dictionary. Now here it is a surname. Yes. So then I don't want to, I'll ignore all of them. Right? And
full name, change. Ignore all. That's it. So spelling check is complete and you're good to go, right? So it's taking your spellings. Now this is thesaurus. Thesaurus, I guess everyone knows, or you're not aware of what thesaurus is. Yes? Anyone aware of what thesaurus is? So there is some words in English which you don't know the meaning of. So you don't have to sit with a dictionary. In Microsoft Office, all uh, all Office packages, Word, Excel, PowerPoint, everything, they contain an inbuilt dictionary. And from that dictionary, you can get the similar meanings. So when you click on thesaurus, it's giving you all kinds of results, right? And it tells you genuine का मतलब है honest, frank, open, sincere. इसका opposite है false, right? Hypocritical. Can you see? Authentic, legitimate, and true. तो ये पूरा meaning बताने का काम करता है. So if you have MS Office in your particular hands, all versions of MS Office, it has a thesaurus inbuilt in it. Thesaurus, right? Okay. Next is workbook statistics. These are very small features, huh? That you should know these features, right? Workbook statistics tells you how many sheets are there, cells क्या है उसमें, workbook में कितने files है, sheets है, cells with data, without data, pivot tables कितने हैं. So it's just giving you the statistics की एक पूरे file में क्या क्या लिखा बनाया गया है, right? It's the statistics of that particular file. Checking performance, it's there new in my particular machine, all right? In your machines, I don't know whether it is there. I don't think so with the previous versions. ये feature नहीं हो सकता है. So for example, I have this review again. I'm trying to run it in the different thing. Here it's telling you no optimization. Now this is basically for the performance of Excel. कभी-कभी Excel बहुत slow हो जाए, तो वो identify कर देता है किसके वजह से slow हो रहा है. Then it tries to delete or remove those unnecessary things, and your particular file starts working a bit faster. All right. So that is about the performances. Accessibility is for people those who cannot see. So blind, अगर वो handle कर रहे हैं, तो इसको use कर सकते हैं, right? Translate. Now this particular translate, it has again a translator inbuilt. You put the text. So for example, I'm putting the text as genuine, and then it's translating and giving it into Hindi, right? You can change it to German, right? Change it to, let's go ahead with Marathi. So all kinds of this thing is there. Genuine is asal and sure, right? Fine. So there is a translator, just like your thesaurus, which is available for translation as well, right? Okay. Now here, this section is for comments. As I said that when you are reviewing a document in an office culture, you have machines which are connected to each other. The boss gives the file to the subordinate, and that subordinate goes through the file, does the work, submits it. That's the normal structure, right? So now here, if your machines are interconnected through LAN and everything, file अगर आपके पास आती है, तो this particular boss will go ahead with a comment, right? Now a comment is like a thread. It's like a thread conversation. तो पहले ना एक सिर्फ नोट रहा करता था, अभी वो थ्रेड में कन्वर्ट हुआ है, राइट? So just like a chat. Okay? So here, suppose I am the boss and I say that please check this value and report, right? So now this goes to the subordinate. That subordinate will see, will check, take the relevant action, and from his or her computer will reply to this particular. Okay? Value is correct, whatever is this, ठीक है? And send करेगा, right? So ये यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ पे उस person का machine का नाम आ जाएगा, right? And normally if this is in the business Office 365 setup,
then हर एक machine, हर एक Office 365 is logged in by that particular person's name. तो वो automatically यहाँ पे register होती जाएगा. Who is talking to whom? Alright. Now, once this particular work is done, then you can delete that thread or resolve the thread. Okay. Resolve. इसके आगे कोई messages नहीं आएंगे, but the thread will be seen. Okay. So that is what the comment was. But then, apart from this, now let me just put a comment. I'll put one more comment. Right. I can show all the comments. You can see all the comments of it, right? You can resolve that thread. Now, no longer can you add or reply to that particular thread. You will delete a thread, it's gone directly. Delete a particular thread, it's gone directly, right? So that's how the comments are working. But apart from that comments, there is something called a screen tip. Okay. जैसे ये notes के section में आ जाता है. So initially, comments was nothing like a notes. तो आप right click करके भी new note डाल सकते हैं या फिर you put a note from here, right? Right. तो ये जब highlighter पे आप cursor रखोगे तो आपको वो note दिखाएगा. Right. But then it's not a thread. You are not able to reply to it directly. Okay. You want to see all the notes, go to the previous note, go to the next note, and everything is available, right? Do you want to convert it into a thread now? To convert karke, then you continue with the discussions, right? So your choice, but then that's how it is used for internal communication in the organization, most of it. So that is the section of comments, notes, right? Now coming to this particular section where you wanted to secure your document. That's under the protection. Now in Excel, you have different levels of protections. All right. The first level of protection is protection of the sheet. Now, for example, you had this sheet and you did not want anyone to make changes in this sheet at all. Okay. So for ऐसे situation में you can directly protect the sheet, and here what do you want to allow? Allowing of the selection, माने कोई cell select कर सकता है, लेकिन उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता है. फॉर्मेट कर सकता है क्या? तो उसको आप हाँ बोलो, अलाउ करो फॉर्मेटिंग, अलाउ फॉर्मेटिंग ऑफ कॉलम्स, इंसर्ट कॉलम अलाउ करना है नहीं अलाउ करना है. ये क्या अलाउ करना है आप, राइट? अगर कुछ नहीं करना है तो इसको ऑफ कर दीजिए एंड देन पुट अ पासवर्ड. सो आई एम जस्ट पुटिंग अ पासवर्ड इज ट्राई इन दिस. Re-enter password, try. There it is. Now what happens is that आप इसमें कोई भी चेंजेस करने जाओ so it's telling you it is protected. So no one can make changes in your particular sheet. They can see, but can't make changes. Got it? So this is the first level of protection. Now, a problem is that people can't make changes, but they can delete your sheet. People can't make changes in that sheet, but they can delete your sheet. फिर क्या फायदा हुआ? अगर उसको डिलीट नहीं करना है आपको उस शीट को, then you will have to give the second level of protection, which is called as the protection of the workbook, right? So when you are protecting the workbook, you are protecting its structure. Okay, structure माने कोई नया शीट ऐड नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा. X number n number of things. So I am just giving a try again and try as the password. Done. तो अब आप राइट क्लिक करोगे, इसको देखोगे, you cannot, you have to unprotect the sheet to delete it, but you don't have any deletion over here. Move, copy, delete, कुछ नहीं कर पाओगे. इसके अंदर आप चेंजेस भी नहीं कर पाओगे, राइट? यस, बाकी की शीट्स पे यस, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट नहीं किया आपने शीट को. ओके. स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर सब जगह पे एप्लीकेबल है, कोई भी डिलीट इंसर्शन कुछ नहीं कर पाओगे आप शीट्स. गॉट इट, राइट? So this is the second level of protection that you can give to your particular table, and you will see that this is highlighted, means the workbook is protected. Yes, right? Okay. Then you have to select all the sheets. Shift दबा के सभी sheets को select करो and then delete, give passwords to those sheets. Sheet को अगर ये करना है, right?
नाउ देयर इज अनदर, अभी मैं इसको निकाल देती हूँ, आई जस्ट रिमूव, unprotect the sheet. I'm just unprotecting the sheet over here. Now there is one more option over here कि there are some, जैसे ये वाले जो सेल्स है ना, इसमें आपको चेंजेस नहीं चाहिए, ओके, यू डोंट वांट चेंजेस इन दैट, लेकिन आपको बाकी के सेल्स में चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ओके. फॉर एग्जांपल लेट मी हैव अ file like that. Okay, now I have the order data over here. In this order data, I don't want to make changes in the rates. ठीक है, right? लेकिन बाकी की जगह में मुझे चाहिए changes. So what I can do is that by default in Excel, the cells are locked. By default in Excel, cells are locked. ठीक है, right? तो अब आपको है ना, जैसे आप वो कैसे देखोगे आप, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट, आई शो यू. आप कोई भी सेल सेलेक्ट करो, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हो एंड यू गो इनटू दिस फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन, कैन यू सी. तो ये वाला सेक्शन आपने कभी देखा होगा स्टार्टिंग में, अलाइनमेंट, फॉन्ट, याद है आपको, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इसको. यहाँ पे एक प्रोटेक्शन ऑप्शन है, कैन यू सी, लॉक्ड. सो बाय डिफॉल्ट ऑल सेल्स इन एक्सेल आर लॉक्ड, ओके, राइट. नाउ जैसे हमने कहा कि मुझे है ना चेंजेस कुछ इसमें करने हैं, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी जो है मुझे इसमें चेंजेस चाहिए, बिकॉज दैट इज द क्वांटिटी दैट आई एम गोइंग टू एंटर, बाकी इसमें चेंजेस नहीं चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ओपन दोस सेल्स. So I'll select, I'll right click and I will say into format cells, protection, unlock. मीन्स क्या किया मैंने, बाकी सभी सेल्स जो है वो लॉक्ड है, सिर्फ मुझे जहां एंट्री चाहिए, अलाउ करनी है, वहां पे मैंने अनलॉक कर दिया, राइट. गॉट दिस, इतना तो यहाँ तक आ गया. नाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर शीट. So I'm putting the sheet protection and obviously sheet protection is necessary, नहीं तो इसका कुछ यूज नहीं होता है. Here it is, right? इसमें अगर रेट में कोई चेंजेस करने जाए तो उसको आपको वो पॉसिबल नहीं होगा. बट क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. तो अब पॉसिबल, दिस इज यूजफुल फॉर एनी वर्किंग पर्सन, क्योंकि आपको इसको कंट्रोल करना होता है एट द मैनेजरियल लेवल, जैसे, ठीक है. नाउ देयर इज अ ग्लिच ओवर हियर. अगर आप पासवर्ड भूल गए तो बॉस भगवान भी आ जाए तो आपको मिलेगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. तो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आजकल आने लगे हैं, वो आप अगर रन करते हो तो इट इज एट योर रिस्क, ओके. यू आर गिविंग योर फाइल टू एन अननोन सोर्स, देन इट इज योर प्रॉब्लम. इसलिए पासवर्ड भूलो मत, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रीसेट पासवर्ड इन एक्सेल. मैं ऐसा करता हूँ, अगर ये फाइल्स को शेयर करेंगे और अगर वो ओपन करेगा तो पासवर्ड एक्सपेंड कर सकता है. यस, सो वहां पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा उस पर्सन को कि यू वांट टू यूज इट, यू टेक दिस पासवर्ड एंड देन यूज इट. पर पासवर्ड भूल जाते हो तो कोई नहीं हेल्प कर पाएगा, ओके, राइट. पे पासवर्ड बनाना है और मैं सेव करके शेयर करती हूँ, शेयर तो वो पर्सन नहीं खोल सकता है, उसको हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, उसको खोलना है तो. देखना है, सब कुछ देख सकता है ना, स्क्रीन पर है, वो सब मटेरियल है, मैटर है, सब कुछ है. दे कैन सी द डेटा बट दे कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा अंडर एनी. यस, राइट. अनप्रोटेक्ट कर दिया मैंने शीट को, देयर इट इज, ओनली देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग विथ व्हाटएवर आई वांटेड. तो अब ये भी चेंजेस हो सकते हैं एंड ये भी चेंजेस, गॉट इट, राइट. And one ultimate level for protection is obviously password to your file complete. तो उसको कैसे देना है, you going to save as, right. इसमें है ना, जब आप सेव कर रहे हो किसी फाइल को, तो you have an option called as more options over here, can you see? Okay, तो ये बता रहा है कहाँ सेव करना है आपको, क्या है, कैसे है. All these sections are available over here and at the bottom
You have some tools. Can you see? इस टूल्स के अंदर है ना, यू हैव जनरल ऑप्शंस. इसमें आपके पास यहाँ पे है पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई. नाउ दिस इज अ डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू योर एक्सेल फाइल. To open, I'm giving try, try. To modify the file, I am giving fri, fry. Okay. So there is a level. अब यहाँ पे है ना, रीड ओनली रेकमेंड करना है तो आप इसको ऑन करके रख सकते हो. माने क्या, जब भी फाइल खुलेगी तो इट विल बी रीड ओनली. माने आप देखो, फाइल के अंदर जो भी है वो देखो, एडिट कुछ नहीं कर पाएगा. राइट, फाइन. बट देन अगेन ये दोनों भी लेवल्स पता होने चाहिए पासवर्ड. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एंड ऑलवेज क्रिएट बैकअप. ये तभी ऑन करोगे जब आपकी फाइल इतनी जरूरी है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट. उसका एक हर बार बैकअप क्रिएट कर सकते. बट इसको ऑन मत करो अगर आपके फाइल्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो. नहीं तो है ना, इतने सारे बैकअप फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं तो आपका हार्ड डिस्क ही खत्म हो जाता है. वो हमेशा एट द बैकग्राउंड बनाते रहता है कोई ना कोई बैकअप फाइल. राइट. Okay. Let's see how it works. I am giving a password to this. Re-enter the password to open. Try मैं डाल रही हूँ and to modify fry डाल रही हूँ and then that's it. And I save it. So ये जो Excel July file है मैं save कर रही हूँ. It's the same file, so मैं replace कर देती हूँ इसी files के साथ. There it is. And I close this particular file. Right. Now when I try to open the same file, this file, it's first going to ask me for the password. Right. अगर मुझे ये पहला वाला पासवर्ड पता है तो ही ये ओपन होगा. So जैसे try is the first password. अब ये बोल रहा है कि बॉस तुझे, अगर मैं इसको रीड ओनली के तौर पे ओपन कर सकता हूँ, पर अगर उसमें चेंजेस चाहिए आपको तो फिर वो नहीं हो पाएगा अगर आपके पास दूसरा पासवर्ड नहीं है तो. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल यू डिड नॉट नो दिस पासवर्ड, तो आप रीड ओनली के तौर पे इसको खोल सकते हैं. मैं रीड ओनली का फाइल ऐसा होता है कि आप देख सकते हो, आपको लगेगा आप चेंज कर रहे हो. ओके. बट जब आप क्लोज करोगे तो पूछ रहा है ना, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल. अगर आप सेव करने जाओगे तो भी ये बोलता है कि ये रीड ओनली फाइल है, मैं तो सेव नहीं कर पाऊंगा जो भी है. गॉट इट. तो इस बंदे को एक तो दूसरा फाइल नाम से सेव करना पड़ेगा या फिर डोंट सेव बोल के बाहर निकलना पड़ेगा. ओरिजिनल फाइल रिमेन्स इंटैक्ट. गॉट इट. सो फाइल दिस ओपन, पहला पासवर्ड ओके. दूसरा पासवर्ड आप डालोगे तो ही एडिटिंग के आपके पास राइट्स होंगे. राइट. अब अगर आपको इसको पासवर्ड्स को निकालने हैं तो भी इट्स अ फन, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर फाइल में जाके यू विल हैव टू गो अहेड विद सेव एज ऑप्शंस. आपके पास जो भी ये टूल्स ऑप्शंस है, जनरल ऑप्शंस, डिलीट करना है, डिलीट करना है, ओके करना है, सेव वापस करना है, एंड इसने बोला कि एक्सेल के पासवर्ड्स अगर आप भूल जाते हो तो फॉरगेट योर फाइल. ओके. तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है बिफोर यू यूज द प्रोटेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल्स. ये पासवर्ड ये मत करो. देयर आर टूल्स. आजकल के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है, आई अग्री. आप कोई भी पासवर्ड क्रैकर भी निकाल सकते हो इंटरनेट पर से, पर रिमेम्बर उस फाइल को आपको उस थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, तब जाके वो फाइल क्रैक करके देगा आपको. देन इट इज योर चॉइस कि आपको आपका फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल किसी के हाथ में देना है या नहीं देना है. ओके. सो दैट्स योर लुकआउट. ठीक है. तो ये एक है कि जब आप यू कैन ऑलवेज, एंड दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड ऑफ विथ एक्सेल, जिसे हम कहते हैं ना ऑफिस 365, एक शेयर पॉइंट सर्विसेज नाम से ये किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने काम लोग कर रहे हैं, जैसे वी ऑल आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. राइट. तो से आई एम द मैनेजर ओवर देयर, तो मेरे पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स होंगे उस फाइल को हैंडल करने. आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक राइट्स होंगे, आपके नीचे वाले जितने हैं उनके कुछ स्पेसिफिक राइट्स होंगे. उस तरीके से डिवाइडेड होता है स्ट्रक्चर ऑफ द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे डिसाइड करके रखते.
तो फिर देन दिस पासवर्ड प्रोटेक्शन इसका मैटर ही नहीं आता। जो फाइल आप शेयर करने के लिए अलाउ करोगे वही वाला फाइल आप ओपन करके देख सकते, राइट? सो दैट स्ट्रक्चर इज मेंटेन जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। हर कोई आपके गूगल ड्राइव में जाके कुछ देख नहीं पाएगा ना, अनलेस यू गिव द परमिशन टू डू दैट। ओके, तो वो स्ट्रक्चर डेफिनेटली फॉलो होता ही इन कंपनीज, राइट? सो दिस इज अबाउट द सेक्शन कॉल्ड एज प्रोटेक्शन। हाइड इंक, इंक करो, so there are some annotations I guess यहाँ पे कर सकते हो। I have not used this feature much. Let me see how it goes, right? Allow edit, ये जो पार्ट है it is like when you are sharing this workbook, जब कोलैबोरेशन कर रहे हैं ना, जैसे मैंने मेरी फाइल शेयर कर दी आपके साथ, तो एक ही साथ हम दोनों भी एक ही फाइल खोल सकते हैं। बट देन ऐसे सिचुएशन में कुछ अलाउ करना कर सकता है वो, कुछ अलाउ नहीं करेगा। कुछ फीचर्स, जैसे कुछ फीचर्स टोटली ऑफ हो जाते हैं जब आप इसको शेयर करते हो फाइल को, तो देन देयर आर सम फीचर्स जो टोटली ऑफ हो जाते हैं, जैसे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो वाले फीचर्स ऑफ हो जाते हैं, राइट? बट देन दैट इज इन दैट एंटायर स्ट्रक्चर। अगर आपको टाइप देखना है तो आपको लैंड चाहिए, फिर आपको वो सब अरेंजमेंट चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सी दैट फीचर। ओके, इंडिविजुअल मशीन्स पे यू कैन ऑलवेज ट्राई आउट विद दीज टू फीचर्स। फाइल को भी आप पासवर्ड देके यू कैन ट्राई इट। ओके, so this is under the review section. Okay. So next session we will see the view and the printing part of it. Okay, and एक recap कर लेंगे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे कुछ बाकी है कुछ थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, then the course will get over. ठीक है, right? आप में से कितने लोगों को कितने लोगों के पास ऑलरेडी प्रिंटिंग का ऑप्शन है? एनीवन हु